Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. So the market has given an extremely sharp fall today, and we believe that this can go on till the budget because it happens almost every year during the budget time. So the exact cause of fall is not known because whatever the reasons were there, they have already been accounted for in the charts. But since the FIIs are on a selling spree, so we don't know as to where they are going to stop. But yes, there might be a little more weakness in the indexes in the days to come, and we might see some more fall in the stocks as well. So as of now, you will not see very large amount of stocks in a portfolio in green. Maybe all of them must be in red. So there's nothing to worry about. It happens in the stock market. Yes, you must be realizing that what is the importance of stop loss in these cases. So that is why we always advise you to consult your financial consultants or advisors to revise your stop losses from time to time. So now nothing can be done. You will have to wait, or you will have to book the losses if you can't hold the stocks, if you have purchased the stocks on margin. So that is the disadvantage of buying stocks on margin. So we will be discussing a stock that did show some strength in the latter half of the day when the market started recovering. It was one of the fastest stocks that showed some recovery, and it could be the major reason behind this could be the results that it had posted in the recent quarter. So PVR showed some strength when the market started recovering, and we even advised it to our members to buy it at the price of around 1503, 1504, and immediately it went up to 1527 immediately as soon as we advised it to our members. So why this stock is showing some strength even in this kind of a market? Yes, it did fell to around 1477 rupees, but it quickly recovered and went up to 1527, and it has managed to close at a price of 1527, though it has been falling since last few days. Obviously, if the entire market is falling, PVR cannot be spared out of it, but it did show some strength today, and it has managed to close above the major level of 1498. If you have not watched a previous video of PVR cinemas, you should watch it, because we had identified this V-shaped pattern in this particular stock, this PVR stock, and after we had identified it, the stock went up to 61605 rupees, and after that, because the market is falling, this stock is also falling. But with the kind of recovery that it showed today in the latter half of the at the time of closing of the market, it shows that PVR has some strength in it. Obviously, if the market keeps on falling, PVR will not be spared at all by the big players or by the retailers as well, because they will sell the stock in kind of a panic selling mode. So it cannot be spared. But yes, this stock needs to be discussed because it did show some strength today when the market started recovering, even though a lot of shares did recover. But the way PVR cinemas recovered, it was quite extraordinary, because we keep track of this stock. So we told our members to buy it. We gave it like a sure short call at the price of 1503, and it went up to 1527 almost immediately, almost within 10 to 15 minutes. It was at 1527. At that time, Nifty was around maybe 17,000 something level. So the market also started recovering, but the recovery in this stock was very, very fast. So we will be discussing as to what can happen in this stock. So first of all, who is holding this stock, he or she needs to be aware of the fact that 1498 is a very strong support for PVR. It did went below 1498 today. It went up to 1477, but it didn't close below the level of 1498. So you can take this level of 1495, 1498 as a critical level for PVR cinemas. As soon as if PVR cinema starts closing below this price of 1498, 1495, you will have to immediately consult your financial advisor and discuss with him as to how you should be handling this stock if you are an extremely short-term investor. So you need to discuss this with your consultant, because today the stock withheld the fall, but we are not sure as to whether it can continue to hold it, because the market is showing extreme falls. So we cannot hope that PVR will be spared out of it. So you will have to be very, very cautious. And this level of 1498, 1497 is very, very critical for PVR. If it starts to close below this particular level, then there can be a problem. So please stay in touch with our financial advisor during these critical times and make sure that he
or she advises you as to how you should function if it starts to close below the price of 1497, 1498. So we will just mention the price so that you can keep a track of it. So critical range, we are specifying the range. Critical range is 1495 to 1495 to 1498, and within this range, if it starts to close below this range, then there can be a problem. So because today this stock has showed some strength, we thought that we should discuss this with you because we had already posted a video on this particular stock. So PVR Cinemas had posted good results in terms of that it has its profit has, though there's no profit in its financial statements, its loss has reduced from the previous quarter, and that is quite substantially. So if you want to study the financial statements of this company, you can visit the BSC website and search for PVR Cinemas, or you can simply type a PVR Cinemas result BSC. The will automatically get the desired link. So because of the good results, we believe that this stock has withheld the fall today. Also, what is going to happen in future, as soon as the corona restrictions are lifted up, these type of stocks like PVR Cinemas, Inox Leisure, hotel stocks are likely to move up. So today, yes, there is a sharp fall in it, but you can also see how it had went up from 30th December to 17th of January. It went up like in a continuous succession. So we cannot say that a stock will continue to keep going up like this. But yes, today at the end of the day, it showed some good strength. So you can discuss it with your financial advisor or consultant as to what you should do in case the stock starts to close below the level of 1495 or 1498. It is the critical level for PVR. We believe that a lot of people are holding this stock. So please keep this range in your mind. Consecutive closing below this level, below these levels would indicate further weakness in this stock. So you need to be a little more cautious. Also, we would advise everyone from our end to buy stocks only when they see something strong in its financials, because when markets fall, no technicals work, no fundamentals work, but when markets recover, it is the fundamentally strong stocks that recover quickly as compared to the non-fundamentally stocks. This is a very basic crux of the market. People should be aware about it, that when the market starts to recover, the fundamentally strong stocks are likely to recover faster than those which are fundamentally weak. So please make a note of that. Don't worry that TCS is falling, Titan is falling, PVR Cinema is falling. Today, almost every other stock has fallen. But does this mean that the companies are going to get closed? Not at all. Absolutely not at all. So you need to identify stocks that are fundamentally strong, that have posted good results in the third quarter. So please be a little cautious. Don't buy stocks just because they are falling, they are available at a cheaper price. Yes, you can or you may buy stocks only after discussion with your financial advisor or consultant. First of all, that. Secondly, look for stocks that have posted good results in quarter 3 as compared to quarter 2, and better if the company has posted better results on year basis. You can check the fundamentals very easily of any company. There are a lot of websites from where you can get this information. So please don't buy any stock just because it is of a low price, or it is available at a cheaper price, because it has fallen from a very high level of, maybe you are seeing a decline of 20%, 30%, as you have seen Zomato today. So 20-30% stocks have declined in a 20%. We believe that it has hit the lower circuit. So be a little cautious. Stay invested in fundamentally good stocks. At this point of time, technicals don't work. They fail on a continuous basis. Markets are falling like anything. So this is a piece of advice from us. When the markets will recover, you can check for yourself. The stocks which are fundamentally strong are going to recover very, very quickly as compared to the stocks which are fundamentally weak, because everyone wants to stay invested in stocks which are likely to show growth in the coming quarters or years, and not in stocks which might show growth in the coming quarter. So there is a difference between the higher the probability of posing better growth, you will see sharp upside in those stocks. So please, yes, as of now, all the retailers will be very, very worried. These kind of falls do happen. So this is stock market. It is not in anybody's control, but you can stay a little alert and don't worry, everything will be all right.
The only thing that you need to understand is don't buy any stock just because it is available at a cheaper price right now. You need to identify the right stock with the right fundamentals, and after that you can stay invested in it, or you can buy that particular stock, but only after consultation with your financial advisor. So for anyone who is holding PVR cinemas, the critical range is 1495 to 1498. As of now, there is nothing to discuss in this stock in terms of upside. Yes, we can provide you the level. The upside level would be something here. So once this stock crosses the level of 15, this particular level 1588, and manages to close above it on a continuous basis, after that you can see further upside in that stock. So on the lower range, on the lower end, the critical level is 1495 to 1498, and on the upper side you will have to wait for the breakout at a price of 1590. Yes, the breakout has already occurred, but the stock could not manage to sustain above it. So the stock needs to close above this level of 1588 on at least 2 to 3 consecutive closings. So after that you can see further upside in PVR cinemas. So we have given you two levels, 1495 to 1498 on the lower side, and on the upside it will have to cross 1588 and manage to close above it for 2 to 3 days for further upside in the for basically further strength in this particular stock. So now we will be discussing about PVR cinemas in Hindi for our Hindi viewers. So please stay tuned. हेलो मेंबर्स, मैं अमन बोल रहा हूँ पीवीआर अपमूव स्टॉक से। सो आज मार्केट ने बहुत शार्प फॉल दिया, तो आज ऐसा तो हम कोई स्टॉक डिस्कस नहीं कर सकते कि जिसमें कोई स्ट्रेंथ हो या जिसने कोई स्ट्रेंथ दिखाई हो। बहुत ही कम स्टॉक्स ऊपर थे, या ऊपर थे भी तो बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर नहीं थे। तो हमने एक स्टॉक को रिविजिट किया है, उसका नाम है पीवीआर सिनेमास। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो पोस्ट किया था कि जब ये वी शेप का ब्रेकआउट देगा तो 1755 तक जा सकता है, और हमने उसमें कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक तोड़ेगा और एकदम से पहुंच जाएगा। बट आज क्या हुआ है कि आज स्टॉक ने जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है रिकवरी में। तो आप देख सकते हैं कि जो ये फॉल दिखा रहा है वो भी सिर्फ 0.68% का दिखा रहा है, जबकि जो बाकी शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा 5-5, 6-6, 7-7% गिरे हुए। तो 10 रुपए का फॉल कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। हालांकि एक टाइम पे बहुत नीचे चला गया था, बट इसने बहुत शार्प रिकवरी करी, और हमने 1503 के अराउंड अपने मेंबर्स को बोला भी था कि आप इस स्टॉक को ले सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। और इमीडिएटली हमारे बोलते ही शायद ये 5 से 10 मिनट में 1527 रुपए का लेवल टच कर चुका था। तो इसलिए हम स्टॉक का रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं कि आपको अब क्या लेवल्स ऑब्जर्व करना है जिनके पास ये स्टॉक है। तो हालांकि स्टॉक ने 1477 का लो बनाया, बट ये अपने क्रिटिकल लेवल के ऊपर बंद हुआ है, जो कि है 1498 के अराउंड। हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो इस लेवल के अराउंड इसने ब्रेकआउट दिया था वी शेप पैटर्न का, तब ये लेवल ले सकते हैं। तो ये 14 सम अराउंड, हाँ 1498, मतलब अब 1495 से 1498 की रेंज क्रिटिकल है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो अगर स्टॉक इसके नीचे बंद करना शुरू कर देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इमीडिएटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने हैं, जो भी करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस लाइन के नीचे ये गया था, बट फटाफट वापस आया और ऊपर ही बंद कर दिया इसने इस पर्टिकुलर लेवल के। तो 1495 से 1498 की जो रेंज है पीवीआर सिनेमास के लिए वो क्रिटिकल है। अगर इसके नीचे लगातार बंद होना शुरू कर देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर की तरफ जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो इसको लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, वो है 1588। तो जब तक ये 1588 के ऊपर बंद करना शुरू नहीं कर देगा तब तक ये स्टॉक फर्दर स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा। तो आपको 1588 ऊपर की तरफ लेकर चलना है, और नीचे की तरफ 1495 से लेकर 1498 तक। जैसे ही इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर ये शेयर और ऊपर जा सकता है। इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट हमने कुछ बताया था वो अराउंड 1755 रुपए था। हमारे वीडियो पोस्ट करने के बाद 1605 रुपए तक गया भी है। हमने जब वीडियो पोस्ट किया था तब ये शेयर 1482 रुपए पे था। तो अब जिनके पास भी स्टॉक है वो इन दो लेवल्स का ध्यान रखें, 1495 से लेकर 1498 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 1588। जहां पर भी कंटिन्यूस क्लोज करना बंद कर देगा आपको इमीडिएटली उसी के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। अगर ये इसी रेंज में मूव करता रहता है तो फिर हमें कंसोलिडेशन का, ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो कल देखते हैं मार्केट कैसा रहती है। हाँ, एक और चीज कि हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़े दिन और वीक रहे, क्योंकि बजट के दौरान ऐसा होता है
और हमें ये भी नहीं पता कि FIS के पास कितना माल बचा हुआ है और कितना वो बेचने के मूड में भी और है, तो फॉल हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डर भी लगे कि यार यार मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बुक नहीं किया, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा होता रहता है। अभी बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि इस प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, इस प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, ले लो, घुस जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। मार्केट का एक बहुत सिंपल सा रूल हम आपको बता रहे हैं कि जब मार्केट पिटती है तो सभी पिटते हैं, बट जब मार्केट ऊपर चढ़ती है तो सबसे पहले वो स्टॉक ऊपर चढ़ेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप ये देखिए कि किस स्टॉक ने पिछले क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया इस क्वार्टर में, पहला ये, और ईयर ऑन ईयर किस स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। पीवीआर सिनेमाज ने इवन दो इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया है, बट उसका लॉस रिड्यूस हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आप देख सकते हैं इसका, अगर आपको इसका रिजल्ट स्टडी करना है तो आप बीएससी की वेबसाइट पर जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके लॉस में कमी आई है, तो वो भी एक तरह का प्रॉफिट ही है, क्योंकि अगर लॉस पहले 2000 कुछ का था और अभी 300 कुछ का हो गया, तो 1700 से उसका लॉस कम हुआ है। तो आपको ये सारी स्टडी भी आप कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि जब मार्केट में रिकवरी आएगी, आप देखिएगा, आप हमारे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए, कि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो वो टेक्निकल्स के बेसिस पे नहीं आएगी। टेक्निकल्स लेवल डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, बट जब अपसाइड आएगा तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अपसाइड जल्दी आएगा। आप देख लीजिएगा ऐसा ही होगा, क्योंकि जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके गिरने का डर, उनकी कंपनी बंद होने का डर हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू वो कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं आखिरी बार कि नीचे की तरफ 1495 1498 क्रिटिकल लेवल है, इसके नीचे बंद होना शुरू कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर की तरफ 1588 मेजर रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा तो आपको फर्दर अपसाइड इस स्टॉक में नजर आ सकता है। तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।